Welcome at Newcastle Training Center. This is your trainer Shahzad Anwar. आज की ट्रेनिंग में आप ये सीखने जा रहे हैं कि एक्सेल में कंकैटिनेशन की क्या ऑप्शंस हैं. इट मीन्स कि हम टू और मोर सेल्स के डेटा को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. So various joining and the presentation options of data, that's what we looking at. Okay, so suppose हमारे पास ये हमारा कुछ sample data है. Let me take you to that sheet. Exactly. Okay, over here हमारे पास sales का sample data है और इस डेटा में यहाँ पे हम कुछ कमेंट करना चाहते हैं. If the sales value is more than, let's say, $6,000, तो यहाँ पे हम कुछ कमेंट देना चाहते हैं इस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए और उसको कुछ स्टार रेटिंग हम देना चाहते हैं, ठीक है. सो इसके लिए हम कॉन्कैटिनेशन यूज कर सकते हैं. इफ कंडीशन भी यूज करेंगे. पहले मैं आपको सिंपल कॉन्कैटिनेशन बताता हूँ, फिर हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ आ जाएंगे. ओके, सो concatenation करने के लिए equal, let's say हम कहें कि Gigi's sales is this, तो we say Gigi, okay, और फिर उसके बाद एंड साइन से हम concatenate करें और यहाँ पे मैं कुछ कमेंट दे देता हूँ. let's say well done और एंटर, तो आंसर आ गया गिगी वेल. ओके, कॉन्कैटिनेट कैसे किया? इक्वल सेल रेफरेंस C2 एंड कॉन्कैटिनेशन के लिए, ज्वाइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और डबल कोटेशन मार्क्स में आप अपने टेक्स्ट जो भी रिमार्क्स हैं उनको आप एंटर करते हैं, ठीक है. सो इसे गिगी वेल. ओके, नाउ वी कैन concatenate two of columns data. So we can say, अच्छा गिगी आगे वेल डन, तो वेल से पहले स्पेस नहीं है, आप देख रहे हैं, तो आप यूँ करें डबल कोटेशन मार्क्स में वेल से पहले एक स्पेस दे दीजिए. सॉरी, एंटर एंड नाउ इट लुक्स नाइस. ओके, नाउ इसको ड्रैग करें तो ये सब ऐसे नीचे हो जाएगा ना. ओके, well, now we want to concatenate this figure Gigi with we say Gigi sales is, उसके बाद एक और स्पेस दे दें, फिर कोटेशन मार्क्स को क्लोज करें और फर्दर हम concatenate करना चाहते हैं सेल्स को. सो concatenate करने के लिए एंड साइन यूज करते हैं. एंड साइन यूज कीजिए, स्पेस और किसको, सेल्स को कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं, उसको क्लिक कर दें एंड एंड. सो गिगी सेल इज दिस. ऑलराइट, यू गॉट इट. सो दिस इज कॉन्कैटिनेशन. आप कॉन्कैटिनेशन को वेरियस पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं. यू कैन डू इट फॉर द स्टार रेटिंग एज वेल. लेट्स से हम कहें कि जैसे यहाँ पे कुछ हम अप्लाई करते हैं कि if चलिए इफ कंडीशन से भी हम कुछ ये काम कर सकते हैं. लेट्स से, बट दैट वोंट बी, we will try to bring it into the concatenation. एक और एग्जांपल समझें concatenation की. That is, यहाँ पे तो हमने concatenate किया दो सेल्स को और in between टेक्स्ट को. ओके, आप मल्टीपल सेल्स को भी concatenate कर सकते हैं. लाइक हम कहें कि इक्वल साइन में यहाँ पे कहें सेल्स रैप इज और फिर एंड लगा के कॉन्कैटिनेट कर दें आप इसको. Here we go.
sales rep is moved. Okay, like that. So multiple ways हैं sales rep is moved and आगे भी इसको मज़ीद concatenate करना है तो फिर एंड साइन लगाइए और and we say sales is ठीक है और फिर concatenate करना है तो एंड साइन लगाइए और आगे सेल्स का फिगर लिख दीजिए जो कि ये है ओके एंड so sales rep is more and the sales is this here we go ठीक है so with and sign you can concatenate possibilities are limitless और साथ ही में मैं आपको समझाना चाहूँगा if criteria equal if कैप्स में लिखें फार्मूलाज तो लॉजिकल टेस्ट करें if and the logical test is this sales is greater than let's say 6,000 if this sales is greater than 6,000 तो वैल्यू रिटर्न करें आप let's say हम इसके ऊपर 4 स्टार वेटिंग देना चाहते हैं okay and then we say and then close it okay यहाँ से ये स्पेस थी इसको हम रिमूव कर देते हैं so if sales is greater than this then 4 star rating and then close the bracket rather than comma if the value is false then what to do then do nothing तो nothing के लिए डबल कोटेशन मार्क्स 2 टाइम्स लगा के आप उसको क्लोज कर दीजिए ठीक है and okay and then we scroll down okay so where the sales is greater than 6,000 we have the stars right okay good yeah then if conditions को हम multiple ways में भी use कर सकते हैं let's say हम concatenate करते हैं हम concatenate करते हैं if say sales is greater than 6,000 or what if sales is greater than 5,000 ठीक है value if false तो यहाँ पे हम एक और if condition लगा दें ठीक है if फिर logical test sales is this sales is greater than 5,000 then what to do then उसको 2 star rating दे दें okay and if it's false तो फिर उसको आप यानी अगर 5,000 से भी ग्रेटर नहीं है उससे लेस है तो फिर हम उसको सिंगल स्टार रेटिंग दे दें ठीक है and then close the bracket first bracket and then close the outer bracket as well and then end okay इस फॉर्मूला को हमने कॉपी कर दीजिए here we go right so you can use the formula I mean the multi-level of formula single test with F उससे आपका एक रिजल्ट आया और फिर जहाँ पे टेस्ट ट्रू है तो स्टार रेटिंग और अगर ये कंडीशन फॉल्स है यानी सेल्स ग्रेटर देन 6,000 नहीं है तो आप एक और इफ कंडीशन लगा दें मे बी इट्स ग्रेटर देन 5,000 राइट सो दिस वे यू कैन अब ये जो रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं इनको आप यहाँ पे मजीद आप में भी कॉन्कैटिनेट कर सकती हैं आप कहें कि इक्वल Gigi's रैंकिंग इज ठीक है और जो भी उसकी रैंकिंग है उसको आप कंकैटिनेट करें जो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है उसके साथ ओके सो हियर वी गो गिगी रैंकिंग इज दिस एक स्पेस दे दें यहाँ पे इसके बाद 2 स्पेसेस दे दें सॉरी okay so Gigi is ranking this okay और इसको आप नीचे concatenate here we go
But oh sorry, this is not gig is ranking, this is your sales person ranking. तो यहाँ पे हमें इसको फिक्स नहीं करना है, बल्कि हम कहें यहाँ पे इक्वल, और हम कहें कि दिस सेल्स पर्सन concatenate करें इसको एंड साइन के साथ, then we say ranking is, और फिर concatenate किया I3 के साथ. Here we go. So move ranking is this, and here we go. Right? So इस तरीके से आप एंड ऑपरेटर साइन को एज अ ज्वाइन, एज अ concatenation ऑपरेटर के तौर पे यूज कर सकती हैं, और जब आप उसको इफ कंडीशन के साथ यूज करें, then you can produce so many of the dynamic results out of it. Okay? अच्छा, ये जैसे फॉर्मूला लगाते हैं थोड़ी सी एरर आ जाता है, लाइक जैसे आप एक्सपर्ट हैं, कॉलम नहीं लगाए या कॉमा, वो फिर कैसे पता चलेगा कि एरर कौन सा हमारा? अच्छा, जो फॉर्मूलाज में एरर्स आते हैं, अगर लेट्स से कि हमने यहाँ पे ये एंड साइन नहीं लगाया तो और एंटर कर दिया तो फॉर्मूला ठीक है वो नहीं हो रहा, वी फाउंड अ टाइपो इन योर फॉर्मूला. ओके, सो बहुत केयर जो आपको करनी है वो ये कि आप देखेंगे ऑपरेटर आप लगा रही हैं और कोटेशन मार्क्स आप लगा रही हैं, बस इसी तरह की चीज़ें होती हैं. ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ हिंट भी मिल रहा है, राइट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक शायद हिंट भी मिल रहा है कि देखिए यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स होने चाहिए थे पर लेकिन नहीं है. ओके, डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन? सिस्टम ने 2016 वर्जन में ऐसा है, ऑटोमेटिक इसको करेक्ट कर दिया है और पूछा कि आप इसको करेक्शन को अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर दें. सब फॉर्मूलाज में ये ऑप्शन है? नो, नॉट इन ऑल फॉर्मूलाज. जहाँ पे सिस्टम आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ऑफिस 2016 आपको वो आपके लिए ऑटो करेक्ट कर देता है. ओके, बट इन द ओल्ड वर्जन्स दिस फीचर इज नॉट अवेलेबल. ठीक है, वहाँ पे आपको खुद अपने फॉर्मूला को करेक्ट करना होता है. एनी अदर क्वेश्चंस? Wonderful. So I hope you enjoyed this training as well. This was a small session, but nevertheless, we're gonna move with the next training options. The next we're gonna talk about the topics which we have, queries and VLOOKUPs and formulas. Okay, so wish you very best everyone. See you next.